Assalamu alaikum, Nazreen, Khawateen, Hazrat, Buzurg, Bacche. Welcome to our show. Aliens. Oh, aliens? नहीं, Oh, no, it's called Do Mastane. Welcome to our show, Do Mastane, presented by Cinedreams Media Inc. I just wanted to get that out of the way. But I also wanted to mention that Cinedreams, being one of the largest conglomerates in the entire world and the universe and in Jupiter and Saturn and basically all dimensions. I truly, with the bottom of my heart and my stomach. And from the stomach, where there is pressure right now. And beyond, I am very thankful and grateful for their support. I am also very... This season, Allah unke business ko khoob kamyab kare. Bilkul. Alhamdulillah, ameen, ameen, sumami. Boom kare unka business, boom. Boom, boom. हाँ. मैंने एक line सुनी कुछ दिन पहले. अच्छा. And I think, and this is a serious line, but I would say, by far, in my 49 years of living on this planet, it is the best line I have ever heard. और मैं इसको पढ़ूंगा, because I don't want to get this wrong. Here it is. Sometimes, when you're in a dark place, you think you've been buried, but actually, you've been planted. Take that in, man. Take that in. Wow. Sometimes, you know, you amaze me with some of that stuff. Yeah. So that is deep. It wasn't buried, you planted. Yeah, we think you're in a dark place, you think you're buried, but you're not buried, my friend. You have been planted. To grow. To shoot out, to sprout out into the world. Let me tell you something, Abdullah. I was having a miserable morning in a miserable week, and today, with that statement, you have just raised the bar. Raised my spirits. Spirits, इनकी रूह जो है raise हो गई. रूह raise हो गई. I'm just surprised to know that you have a रूह. I only have a nafs. And here's another story that I heard. Not a story, but somebody told me, and this, इससे बेहतर मैंने कभी कुछ सुना नहीं है. अच्छा. So this guy saw two guys. He's driving around. He sees two guys dressed up, same uniform, you know, hanging out together. Okay. तो बेचारे ने उससे कहा कि, hey, how long have you guys been dating? So you know what they did? They arrested him. क्या हो गया यार ज़माने को? अफजल, मुकेश एंड मतलूब. मुनीर भी आ गया. कल फोन किया था उसने मुझे. अच्छा, तो ये इजाज भी आया? इजाज नहीं, वो छुट्टी पे गया. वो सब. अच्छा. गुजरांवाला गया. गुजरांवाला गया. अच्छा. टीवी नहीं है, वो देख नहीं सकता. यार आजकल तो यार रेडी वालों के पास वो लैपटॉप्स वगैरह हैं. यार उन क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो ये जरा मुझे फिर तफसील से मतलब इसका वो तर्जुमा दो जरा. तफसील से बताता हूँ मैं कि एक बंदे ने बाहर गाड़ी में जा रहा है, उसने देखा कि two guys are dressed up in the same uniform, hanging out together. So he goes, hey, how long have you guys been dating? He said, it's okay for two people, you know, to... बजाय इसके वो कहते कि भाई हम इतने अरसे से साथ हैं, उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया. That's a double whammy. Double whammy. It is a double. In a way, it is a double whammy. No pun intended. No pun intended there. Actually, pun intended. Pun intended. Double whammy. Bun intended. Bun intended. Donut intended. And there are two buns there. There's 4 buns. There's 4 buns there actually. Yeah. Anyhow, does that give us a good? Okay, so I'm just wondering. I'm trying to connect the dots here, and I wonder if the two cops and Trump are connected. I don't know. I have a feeling they are. They are. I think there's a cop-Trump situation here. I see the cops and Trump and buns all have a connection. They go together with a little bit of mustard and ketchup. With a little bit of mustard. I don't know about the ketchup, because if it's ketchup, it's a little bit too. There's a little bit too much intensity in there that causes the ketchup. वो वैसे उसके बाल गोल्डन है, mustard ज़्यादा matches more with his बाल. Maybe a little male. A little bit of male. Yeah. Lekin, I think since we are talking about cops and buns, yeah. what the cops should have been
where they should have been, instead of holding hands and walking around a traffic area, they should have been in that. Was it the CNN studio? Oh yeah, it was in the CNN studio, man. It was where somebody got kicked out for making a certain remark, which we cannot even say on air. Holy and then let me tell you something, guys. I haven't, like, in my time watching certain situations occur live on panels, on live discussions, I haven't seen anything like that. I never saw anything like that. मैंने खुद नहीं देखा, but from what live देखा तुमने? नहीं मैंने देखा नहीं. But from what you told me, I think the guy wasn't he, the comment wasn't anti-Muslim more than it was anti, you know, Hezbollah? No, who blew up the Chargers? No, it's real. It got real. It got real, right? So his comment, his joke, was basically putting a negative connotation towards the real people. Yeah, but see, Abdullah, you're looking at that from a very intellectual perspective. It makes sense. The guy's so stupid, he's retarded. I don't want to, I know I'm not supposed to be using words like that. I'm supposed to be politically correct, but I don't give a rat's ass. This guy thought he was a real smart ass by saying, you know, that, oh, be careful, your charger might go off. But he's so stupid, okay? That he did it on air and with you know, that he didn't even realize, and Abdullah's bang on with this, that he's actually cutting up his own goddamn people by saying that, oh, that's what you mean, right, Abdullah? I'm trying to say, like, if I'm sitting, like, suppose you and I are sitting in a panel and we're Muslims, and there's 3 non-Muslim guys, and I make a comment which is pro-Muslim, obviously, you know, coming from me. Yeah. And then this guy makes a joke. He cracks a joke, which is out of line to be on air on such a big network. Lekin uska jo comment tha, that was actually, in my eyes at least, shedding a negative light not on the Muslims, but on the other folks. On the other side. No, but Abdullah, that's true. That was what happened. That was like I said, he's so stupid, that guy, that he doesn't realize how his own people are going, oh my God, what the hell did he just say? What the hell's the matter with this guy? Why was he talking like that in the first place? Yes. Right? नहीं, लेकिन मेरे कहना ये है कि अगर उसका comment जो था, if it was anti-Muslim, maybe the consequences would have been a little different, I think. यार बात ये है, सिंपल सी बात है ये कि जो भी उसकी जो इरादे जो थे, he's a idiot. That's his problem. Yes. All right. And bleep that or beep that. And Evan, don't bleep that. Don't you dare bleep that. I'm telling you right now, people who think that they have free reign to say and do whatever they want to do. That guy was a big time Trump supporter. I don't know. I don't pretend to say that I know what the feeling is, what the sentiment is from the right. A lot of those people are very, very friendly when it comes to Israel. Yes. Israel. The problem is that the hatred is towards the left, because they seem to say that, you know, they're so sympathetic towards the Israeli plight. Okay? Now all I'm saying is, when you pull stunts like that, man, when you say like that, there's bound to be consequences for that. That's all I gotta say. Consequences, there were consequences. My opinion is, had he said something that was not so anti, I don't want to use the word Semitic, but I am. It is anti, what it is? It was anti-Semitic. It was. तो उसका नतीजा जो है ना कुछ और हो सकता था. This is just my opinion. But we don't have too much time, since we are on the topic of the elections, and by the time this episode is aired, we would have known, or the elections would have been completed. तो हम prediction इस वक्त कर रहे हैं, and who knows, I might be right, he might be right, or neither of us might be right. लेकिन मेरी prediction ये है कि neither of us might be right. वो orange बाल वाला, orange बाल वाला साला जिसके mustard जो लगाया है दोबारा president बनेगा. आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैं बस ऐसा ही है कि मुझे ऐसे लगता है
कि ये जो ना ये क्योंकि ये जितना ये साला ये बूढ़ा होता जा रहा है ना उतना ही ये शातिर और मतलब शाना होता जा रहा है ये साला ये शैतान है ना शैतान की उम्र भी दराज होती है और बिल्कुल अकल भी उम्र के साथ बढ़ती है अकल की उम्र के साथ भी बढ़ती रहती है अब ये ही इज लाइक अ फाइन वाइन अब कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये तो है ही साला पागल का बच्चा है ये लेकिन ही इज नॉट मैन ही इज ब्रिलियंट पागल का नहीं शैतान है ये इब्लीस का बच्चा और मुझे तो लगता है कि ही इज गोना विन Oh, so you're on the same page. We're on the same page. I think he's gonna win. ठीक है. लेकिन I think it's gonna happen with a lot of controversy. चलो वो तो देखेंगे. We'll by the time this is aired, the world they would have watched this controversy. Yeah. लेकिन बहरहाल, I'm glad that we're on the same page on this topic. At least on this topic. तौर पे हम होते नहीं हैं. हाँ. और होना भी नहीं चाहिए. होना भी नहीं चाहिए वरना तो फिर कोई मजा ही नहीं है ना इसमें. लेकिन इतना जरूर कहूँगा यार कि बस मैं उसी पॉइंट के ऊपर मैं वापस जाना चाहता हूँ. बस 1 मिनट आपके पास. बात दरअसल ये है यार कि मुझे नहीं लगता कि CNN का जो प्लेटफॉर्म जो है वो जो पैनल जो है ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ठीक है ना तो एहतियात जो है इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस यस नहीं आई एग्री सो वी डोंट डू दैट इन इंडिया पाकिस्तान इंडिया में देखो तुम whether it's in parliament or on their panels वो साले सब के सब साले पागल कुत्तों की तरह वो भौंकते रहते हैं बाकी चैनल के ऊपर देखो they're honking like crazy the least you can do on channels like ABC, CBS and NBC and CNN is act like human beings. Try it. नहीं मैं भी आपकी बात से बहुत सहमत हूँ. If you're on CNN or any major network इस तरह के comments मत करें. I mean you cannot get away with such dark and Abdullah, the guy hurtful comments. Yeah, you know what happened? Unless कि आप अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलें, that's okay. That's fine. मुसलमानों के खिलाफ तो वो टेररिस्ट साले वो तो हैं ही ऐसे गए गुजरे साले वो. मैं ये कहने वाला था कि जल्दी से कहिए ब्रेक का वक्त हो गया है. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बात दरअसल ये है कि that guy once he said that man, everyone started going, hey, what the hell did you just say? They realized that he up, eh? They really realized that. And then he went like this. He went, I apologize. He kept saying, I apologize. करना नहीं चाहिए था. But anyways, he's gone viral. He's gone viral. He's more famous now than he was before that comment was made. So kudos. Yeah, listen, man. Kudos. You want to make a name for yourself? Make a name for yourself. Maybe we're making a name for ourselves right now. I think we're going to get kicked out. That's what I think that's going to happen. चलिए एक break लेंगे. Break के बाद कहीं जाइएगा मत. We will be back with an interview segment. No, what the f*** are you doing with the guys? अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. Flavor भी बहुत अच्छा था, consistency भी अच्छी थी, और thick. कोई कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. चाय आपकी बहुत जबरदस्त बिल्कुल घर वाली चाय कड़क चाय का मजा लेता हूँ घर वाली चाय
of Canada and Chai Social sponsored. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome back नाजरीन to our show दो मस्ताने. पिछले हफ्ते हमारे साथ मौजूद थे हमारे रिश्ते के मामू भी हैं, जैसे मैंने आप सबको बताया था, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हम ख्याल भी हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंशियल भी है और इन्वेस्टमेंट से काफ़ी मेरा ताल्लुक़ रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी फ़िलहाल मेरा जो करंट एक्सपीरियंस इट्स मोस्टली फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इनसे जब भी मेरी मुलाकात होती है वी टॉक अ लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल, as I told you last week. तो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं महबूब जाफरी साहब, who's actually by profession a real estate broker, realtor, लेकिन इनका बहुत पैशन भी है and he's got a lot of experience talking about investments, the different types of stock investments, liquid investments, as well as real estate and other alternative investments. पिछले हफ्ते हमने बात की थी स्टॉक मार्केट पे। आपको हमने बताया था कि किस किस्म के अलग स्टॉक्स होते हैं and whether it's better to time the market or spend more time in the market. तो हमने उन चीज़ों पे we touched on that. आज हमने सोचा कि हम थोड़ी सी अलग एक नया टॉपिक लाएंगे. We'll talk about other investments that are available to you. Maybe we can say they're a little less risky than the stock market, again depending on the time frame. लेकिन बहुत से लोग जो स्टॉक मार्केट्स अवॉइड करते हैं and they're not comfortable, उनके लिए बहुत सी अलग अलग किस्म की इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं और आज हम उसी पे बात करेंगे. चलिए महबूब मामू, बहुत बहुत शुक्रिया आप फिर से तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो, और आज हमने सोचा कि आपसे हम बात करेंगे नॉट अबाउट स्टॉक्स, क्योंकि वो हमने पिछले हफ्ते कवर कर लिया था, लेकिन अब अदर इन्वेस्टमेंट्स. और मैंने सोचा कि 4-5 जो मेरे जहन में थी उसमें हैं GICs, bonds, whether it's corporate or government, and maybe other investments like mutual funds, as well as ETFs आजकल बहुत मशहूर हुए हैं, बहुत पॉपुलर हुए हैं, तो उन पे बात करेंगे. तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि GICs का थोड़ा अगर आप लोगों को, हमारे देखने वालों को बताइए कि क्या है, उसकी क्या साइंस है, and is it a safe investment and who should invest in GICs? GICs जो हैं वो गारंटीड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो पैसे आप GICs में डालते हैं उन पे जो रिटर्न है वो गारंटीड होता है, लेकिन वो एक फिक्स टर्म के लिए होता है. जो टर्म जो है 3 महीने, साल भर या 5 साल के लिए होती है. तो एक दफ़ा आपने पैसे अगर उसमें डाल दिए उस सर्टिफिकेट में, तो समझिए कि वो 5 साल के लिए या 1 साल के लिए टर्म के मुताबिक लॉक हो गए वहाँ पर. लेकिन एट द एंड ऑफ द टर्म आपको जो प्रॉफिट उन्होंने वादा किया है, जिसका जो आपसे प्रॉमिस किया है, जैसे आपने $100 2% पे डाले, तो एट द एंड ऑफ द 5-year term, फॉर एग्जांपल, your $100 will be $110, $112, whatever, and that will be guaranteed. So आपको रात को नींद पक्की आएगी, सोने को आपको ये नहीं ख्याल नहीं आएगा कि आपके पैसे ज़ाय हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे. यकीनन वो बढ़ेंगे, लेकिन बस उसमें ख़राबी यही होती है कि एक तो वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न बहुत कम होता है उसमें, और दूसरी बात ये कि वो पैसे आपके फंस जाते हैं, लिक्विड नहीं होते, आप उन्हें कैश नहीं करा सकते जब तक ये टर्म ख़त्म ना हो जाए. सही. और मैंने यही नोट किया है, और ज़ाहिर है मार्केट का ये उसूल है कि जितना लंबा टर्म होगा
उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, लेकिन जैसे फ़र्ज़ करें आपने 6 मंथ के लिए लॉक किया है तो उस पे बहुत कम रिटर्न मिलेगा। आपको 5 ईयर के लिए किया तो फिर भी थोड़ा डिसेंट मिल अच्छा, जाए। एक और चीज़ उसमें ये है कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स में आपको रिटर्न तो 2% मिल रहा है, हाँ, लेकिन आप ये भी सोचें कि आप इन्फ्लेशन भी हो रहा है हर सही, साल। एग्ज़ैक्टली। अगर इन्फ्लेशन भी 2% हो रहा है तो हाँ, इसका मतलब है आपको अगर 100 के 110 मिले तो चीज़ों की कीमत भी जो उसी उस हिसाब से बढ़ वक्त गई। 100 की थी वो अब सही, सही। 110 की हो जाएगी या हाँ, 112 की हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल। मतलब आपको पेपर पे लगेगा कि भई मैंने जो $100 डाले थे 5 साल पहले, आज वो 110 हैं, लेकिन उस 110 की वैल्यू शायद उस $100 से भी कम होगी जो 5 साल बिल्कुल, पहले थी। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। इन्फ्लेशन को आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है ज़हन में। जी हाँ। दूसरा ये, मैं जब शुरू में यहाँ, मुझे कई साल हो गए कनाडा में, जब मैं आया था तो जीआईसीज़ बहुत एक सिंपल व्हीकल होता था, जिसमें भई आपने जैसे $100 डाले, 2% का चूज़ किया, 5 साल के लिए लॉक किया, 5 साल के बाद आपको अपना प्रिंसिपल भी मिल गया और हाँ, आपको इंटरेस्ट भी मिल गया। बिल्कुल। अब वैसे मैं देख रहा हूँ कि नया ट्रेंड आ गया कि 4-5 सालों से, कि इसमें भी थोड़ी-सी दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग मोर कलर इनटू द द रिटर्न्स। उसमें भी अब इंडेक्स लिंक्ड जीआईसीज़ आ गई हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ कुछ जो मार्केट से टाई अप होती हैं, वो रिस्की भी नहीं होती, लेकिन हाँ, उसमें ये है कि लॉकिंग पीरियड अक्सर लंबे होते हैं। तो उसके में कोई खास एडवांटेज है आपको नजर आता है? हाँ, कुछ जीआईसीज़ आजकल ऐसी भी हैं जिनमें आप उनको मार्केट से टाई अप कर दिया कि जो आपको 2% का रिटर्न दे रहे हैं, वो ये कह सकते हैं आपको 2% के अलावा भी हम आपको कुछ पैसे देंगे अगर हमारी कंपनी को हाँ, इतना फ़ायदा हो गया या कुछ हो गया। सही। लेकिन वो गारंटीड नहीं होती, वो जो हाँ, रिटर्न रिटर्न गारंटीड नहीं गारंटीड होता। है, वो रिटर्न वही होता है जो पहले प्रॉमिस किया होता है सही, सही। उन्होंने। मतलब उसमें आपका प्रिंसिपल जो है इंटैक्ट रहेगा। बहरहाल आपको ये खौफ नहीं है बिल्कुल, कि हाँ, मेरा हाँ। प्रिंसिपल गिर जाएगा, और लेकिन सेग्रीगेटेड फंड्स वगैरह की भी बात कर रहे थे ना हाँ, शायद। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो सेग्रीगेटेड फंड्स दूसरा एक टॉपिक मैंने सोचा था कि भई आप सेग्रीगेटेड फंड्स का थोड़ा अगर बैकग्राउंड दे सकें लोगों को। सेग्रीगेटेड फंड्स ऐसी चीज़ है लोगों को समझ नहीं आती। वो उसको समझते हैं कि इंश्योरेंस व्हीकल है, हालाँकि इन थियरी इट इज़, लेकिन इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल आल्सो। Well, the people, their money is invested in the stock market, राइट, but what they do is they guarantee you your principal. Principal. For example, if you spent 100,000 in segregated funds, हाँ, they say they'll give you back 100,000 for sure. And if there is any profit or any capital gain, you will also get that capital gain. सही। You will never get less than 100,000. That's what segregated हाँ, funds. मतलब एक उन्होंने गारंटीड वो आपको एक फिक्स करके दे दिया कि ये अमाउंट आपको हर बिल्कुल, हाल में मिलना बिल्कुल, है, हाँ, और देयर इज़ पोटेंशियल टू मेक मोर मनी ऑन टॉप ऑफ राइट। दैट। उसके अलावा मेरे ज़हन में एक और जो मैं सुनता हूँ अक्सर, वो है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट्स, जो एक ज़माने में मशहूर हुए थे, जिसका कॉन्सेप्ट तकरीबन जब मैंने उसको पढ़ा, सेग्रीगेटेड फंड जैसा ही सेग्रीगेटेड है। फंड्स जैसा था, ये हाँ, एक हद तक जीआईसीज़ जैसा भी था, हाँ, क्योंकि उसमें हाँ। आपको प्रिंसिपल आपको प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने, हम्म, आपका रिटर्न जो है किसी मार्केट से या किसी बास्केट ऑफ स्टॉक से टाई अप कर दिया है, और वो रिटर्न इज नॉट गारंटीड, लेकिन द अपसाइड इज कि भाई आप ज्यादा बना सकते हैं राइट, एक सिंपल इंटरेस्ट जीआईसी से ज्यादा। राइट, सही। राइट। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो एक बहुत मशहूर इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, जो मेरा ख्याल है बच्चा बच्चा भी जिसने सुना होगा, लेकिन लोगों को अक्सर समझ नहीं आती, वो है म्यूचुअल फंड्स। हाँ, हाँ। म्यूचुअल फंड्स हम सुनते तो बहुत हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स जो हैं बहुत अच्छी चीज़ है, लोग अपने आरआरएसपीज में, रिटायरमेंट अकाउंट्स में या सेविंग्स अकाउंट्स में म्यूचुअल फंड्स खरीदते चले आ रहे हैं। थोड़ा उसका अगर आप लोगों को समझा सकें कि वो है क्या कॉन्सेप्ट। असल में म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक कंपनीज जो हैं उनमें कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स कुछ स्टॉक्स को जमा करते हैं और एक फंड बना लेते हैं। सही। और उन स्टॉक्स का एक टाइटल होता है, फॉर एग्जांपल दे आर डिविडेंड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, और दे आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और दे आर इंटरेस्ट बेस्ड, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर आपने फर्ज कीजिए डिविडेंड म्यूचुअल फंड खरीदे किसी कंपनी के, तो आमतौर पर वो वाले स्टॉक खरीदेंगे जो डिविडेंड पेइंग पे होते करते हैं, हैं। जैसे बैंक्स हैं, हाँ, टेलीकॉम्स हैं। बैंक्स और टेलीकॉम्स और यूटिलिटीज़, ये राइट। सारे उनका मिला के एक उन्होंने एक डिविडेंड फंड बना दिया। तो उसमें उस एक डिविडेंड फंड जो आपने $25 का ख़रीदा, फ़र्ज़ करो जिसका शेयर $25 का है, हाँ, उसमें 500 या 40 कंपनीज ऐसी हुई हाँ, जो डिविडेंड पे करती हैं। सही। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो एवरेज रिटर्न जो होता है वो आपका रिटर्न होता है असल सही, में। सही। तो लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है आपकी नज़र में? कुछ ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक हैं? ये है कि आमतौर पे उसमें वो होती है, फीस होती है, फीस होती है, मैनेजमेंट हाँ। फीस होती हैं।
कुछ फीस जो है वो पहले ही चार्ज कर ली जाती हैं जब आप खरीदते हैं, कुछ बाद में, जिसे कहते हैं कि वो डाउनलोड और अपलोड, वो कि पहले ही उन्होंने जब खरीदा तो फीस दे दी पूरी। आपने 100,000 उन्होंने उनको दिए, 100,000 में से 3,000 उन्होंने अपने चार्ज कर लिए फीस के, बाकी आपके लगा दिए, फिर होपफुली आपको फायदा हो गया। जो 97 लगे हैं वो शायद 100 से ऊपर चले जाएं तो आपको फायदा हो जाएगा। तो ये होता है। तो जो मैनेजमेंट फीस होती हैं वो काफ़ी होती हैं, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशो। राइट। तो वो MER कहलाते हैं। हाँ, वो आपको देखना चाहिए कितना है इसमें, कितना वो उस फायदे में से कितना उनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो चार्ज कर रहा है। सही। हाँ, और उमूमन ऑन एवरेज आई थिंक मोस्ट MERs इंडस्ट्री वाइड अगर देखा जाए तो बिटवीन 2.5 to 3% होते ही हैं। तो आपके जो $10 उसमें से आपके $2-2.5 तो आराम से फीस में चले गए। सही। उसके अलावा एक नई जो एक व्हीकल आई है पिछले मैं समझूंगा 10-12 सालों में काफी पॉपुलर हुई है, वो है म्यूचुअल फंड्स की तरह है। They are called ETFs, exchange traded funds. वो भी essentially मेरा ख्याल है म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, लेकिन वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। मसलन ये कि आपने हाईटेक के 10 स्टॉक खरीदे, तो वो हाईटेक का इंडेक्स सारे हाईटेक के स्टॉक खरीद के एक फंड बना दिया, उसे ETF कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी। तो उसमें ये है कि नो रिस्क नो गेन, थोड़ा बहुत गेन तो आपको होगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। उसके अलावा ये है कि वो कोई बहुत ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, वो खाली आपको इंडेक्स भेज देते हैं, जिससे सबका मिला के एक चीज़ भेज देते हैं। सही। हाँ, और उसमें मैं पढ़ रहा था कि चंद एक फर्क ये है कि तो फीस थोड़ी कम होती है, यूजुअली अराउंड 1 to 1.5, उससे ज्यादा नहीं होती, कुछ की तो उससे भी 0.5%, इसलिए कि उसमें उनकी कोई रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होती। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इंडेक्स में ही जो पहली रिसर्च इंडेक्स है उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि रियल टाइम उसकी ट्रेडिंग होती है। म्यूचुअल फंड्स का आमतौर पे ये होता है कि अगर आपको खरीदना है या बेचना है तो इट विल बी बेस्ड ऑन द प्राइस, द नेट एसेट वैल्यू जिसे कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, जब मार्केट्स क्लोज हो जाएंगी 4 बजे। और ETFs का ये है कि आप चाहें तो दिन के किसी वक्त भी, जैसे आप स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो अक्सर लोग ये होता है ना कि भाई मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, और जैसे आपने मिसाल दी कि भाई वो कैनेडियन डिविडेंड्स के फंड्स हैं, और उस दिन कोई बुरी खबर आ गई, सारे बैंक्स जो हैं अपने स्टॉक्स जो हैं उनके गिर गए, तो आप अगर बेचना चाहें तो यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द डे, आप उसको फौरन नहीं बेच सकते म्यूचुअल फंड में अगर है। ETF का फायदा ये होगा कि भाई आपने बुरी खबर सुनी, बिफोर द बैंक्स रिएक्ट यू कैन रिएक्ट एंड सेल ऑफ योर ETFs. That's true. That's one thing to bear in mind, that stocks go up and they go down. So sometimes you hear a bad news, तो आप गलत खबर सुन के जज्बात में आकर फौरन ही ना बेच दें, क्योंकि कल शायद अच्छी खबर भी आ जाए। बिल्कुल। हाँ, इसको यहाँ पे कनाडा में मैं बहुत से टर्म्स मैं यहाँ सुनता हूँ, उसको क्या कहते हैं, नी जर्क रिएक्शन कहते हैं कि भाई आप नी जर्क रिएक्शन से बच के रहा करें, क्योंकि उमूमन लोग फौरन डर जाते हैं, और खास करके रिसर्च के मुताबिक मर्द हजरात जो हैं दे रिएक्ट मोर क्विकली and more negatively towards these news. औरतें जो हैं वो उन चीजों की फिक्र नहीं करती, and they turn out to be better investors in the long run. You have to keep your emotions in control. आप हर चीज को उस वक्त जिस वक्त हो रही होती है उसे देख के फौरन रिएक्ट करेंगे, तो आप उम्मन नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल। चलिए, आखिरी मेरा वाला टॉपिक मैंने जो आज सोचा था वो है बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स जो है, हालांकि आई थिंक जो उनकी पॉपुलैरिटी थी शायद 10-20 साल पहले, अब वो नहीं रही, खास करके हमारे पाकिस्तान इंडिया में। तो ये बहुत बॉन्ड्स जो हैं, एक तो रिटर्न ज्यादा होते थे, उनकी बॉन्ड यील्ड ज्यादा होती थी। यहाँ पे मैं देखता हूँ बॉन्ड्स की वो पॉपुलैरिटी नहीं है। आपका अपना क्या तजुर्बा है? बॉन्ड आमतौर पे कर्जे को कहते हैं। राइट। गवर्नमेंट भी कर्जा लेती हैं, कंपनीज भी कर्जा लेती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर द वंस दैट द कंपनीज बोरो मनी to enhance their business or to more capital towards their capital. और इसी तरह गवर्नमेंट्स they need money at times, तो उस पर वो इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस करती हैं, वो आपको इंटरेस्ट देती हैं। उनकी ट्रेडिंग होती है अपने टाइम के हिसाब से। मसलन होता ये है कि जैसे आपने एक बॉन्ड खरीदा $25 का, लेकिन वो 5 साल की उसकी मुद्दत है, तो $25 का जो बॉन्ड है उस पर उन्होंने 5% देने का आपसे वादा किया। एट द एंड ऑफ 5 years they'll give you that 5% each year return. लेकिन अगर उसी बॉन्ड को आपने, क्योंकि वो पब्लिक में ट्रेड होता है,
आपने 2.5 साल बाद ख़रीदा तो उसका जो रिटर्न है वो 10% हो सकता है, तो इसी तरह बॉन्ड की कीमत भी बढ़ जाती है। right. तो दिस इज़ व्हाट अ बॉन्ड इज़ एक्चुअली, इट्स अ लोन टुवर्ड्स हाँ, सम और बेसिकली उसका जो रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट मार्केट से इट्स इनवर्स। और हाँ कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो फिर बॉन्ड्स उस वक्त शायद फायदेमंद होते हैं। हाँ, वो ये है कि जैसे इंटरेस्ट रेट 2% है आजकल, और बॉन्ड जो है उस पर उन्होंने 5% का प्रॉमिस किया हुआ है, हाँ, तो फिर जाहिर है अगर इंटरेस्ट रेट और कम होंगे तो बॉन्ड की कीमत बढ़ जाएगी बढ़ क्योंकि वो जाएगी। पहले से प्रॉमिस्ड है। सही सही Yeah. सही सही। और वही है, मतलब मैं लोगों को ये देखता हूँ कि पॉपुलैरिटी तो कम ही है, लेकिन जो हैं बॉन्ड ट्रेडर्स, एक जमाने में तो उनके सिर्फ पोर्टफोलियोज में बॉन्ड्स ही हुआ करते थे, लेकिन नाउ द आई गेस द कंसेंसस इज कि भाई अगर आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं तो उसमें भी आप यू शुडंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। या तो आप बॉन्ड्स में ही उसको डाइवर्सिफाई करें बिटवीन कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और जैसे वो ग्रेड्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स नहीं, कुछ और का इंडेक्स होता है ना, ग्रेडिंग होती है, AAA बॉन्ड्स होते हैं, AA बॉन्ड्स होते हैं। बात वही है कि दे प्ले विद टू थिंग्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड टाइमिंग। राइट। कितनी इंटरेस्ट रेट पे किस वक्त लिया और फिर कितना टाइम गुजर गया उसके बाद, सही। तो दैट्स व्हाट दे प्ले विद। हाँ इसी तरह से फ्लक्चुएशन जो होती है मार्केट में बॉन्ड्स की, हाँ, वो टाइमिंग की वजह से होती है और उस वक्त के इंटरेस्ट रेट्स की वजह से सही होती है। सही सही। और आपको वैसे, आपने कभी बॉन्ड्स खुद खरीदे हैं पर्सनल अपने बहुत पोर्टफोलियो अरसे में? पहले ख़रीदे थे, हाँ, लेकिन मैं ज़्यादातर तवज्जो बॉन्ड पे नहीं देता। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ वैसे बॉन्ड्स में के जो क्या कह सकते हैं, नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स बहुत कम मिलते हैं। आमतौर पे अगर लोग खरीदते भी हैं तो वो, और अब तो मुझे ये भी नहीं याद आ रहा कि वो अब कैनेडियन प्रीमियम और कैनेडियन सेविंग्स बॉन्ड जो मिला करते थे एक ज़माने में, मिलते भी हैं कि नहीं? आई थिंक इट्स समथिंग दैट इज slowly Right, I phased out. mean it's a good investment if you want guarantee. Right. तो गारंटीड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आमतौर पर जो चीज़ गारंटीड होती है उनका रिटर्न कम होता है आम मार्केट से। और दूसरी बात ये है कि लोग तो बहुत कम समझते हैं इन चीज़ों को कि भाई ये जो बॉन्ड है ये क्यों महंगा क्यों हो गया, सस्ता क्यों हो गया। महंगा इसलिए हो जाता है कि वो उसने कुछ वक्त ऑलरेडी गुजार दिया होता है। सही। हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सेफ चीज़ होती है वो ये है कि एक कंपनी है